Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. हम तो क्लास चालू है थोड़ा keep your voices down, I guess. So I guess projection of lines is completed. Isn't it? Am I audible? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Okay, so we'll start with the third unit today. That includes projection of planes and projection of solids. Okay. So my name is Dr. Ankur Gupta. I am assistant professor in mechanical engineering department. So I guess I am interacting with you for the first time. Yes. Okay. So what is the difference between a line and a plane? So line consists of 2 points and plane consists of 3 points. 3 points. Is it? Line, we can say it's a one-dimensional object, isn't it? And plane can be defined in 2 dimensions, right? And when we talk about solids, it will become a 3D object. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So it will be an interactive class. So I'll be very happy if you respond to my questions, and if you have any queries, you can directly ask. Okay. So how many types of planes you know? Before starting the PPT, we'll discuss all these things. So horizontal plane, vertical plane, profile plane. That is the axis, coordinate axis. I'm not talking about that. I'm just talking how many types of planes you know. Like it can be a square plane, isn't it? Yeah. A rectangular plane. Angular plane. Yeah. Pentagonal, hexagonal, any types of plane can be there. When we talk about 2D, any shape that is of 2-dimensional can be considered as a plane. Yes, sir. Yes. Yes, sir. So in this chapter, Yes, we're talking about rectangular plane, pentagonal plane, triangular plane, hexagonal plane, or can Yeah. we have circular plane as well? Yes, sir. Yes, sir. If the plane is big Yes, enough. sir. Big enough. It doesn't matter. It's big or small. We can have a circular plane if it is in 2D. And if I convert a circle in a 3D object, what it will become? Sphere. 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 Or maybe a cylinder as well. Yes, sir. Yes, sir. So we have 72 peoples as of now. So let's start the presentation. I hope most of you are using laptop as I asked you to do so. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It's just my initiate. So types of plane. Let's start with the types of plane. Planes may be divided into 2 main types: perpendicular planes and oblique planes.
So what are perpendicular planes? These planes can be divided into following subtypes. Perpendicular to both the reference plane, perpendicular to one plane and parallel to the other, perpendicular to one plane and inclined to the other. So can you imagine all these three No. cases? What are the reference plane? Reference plane? Horizontal and vertical plane. Yes. Horizontal plane and vertical plane. So can you imagine a plane that is perpendicular to both the reference planes? हो सकता है? Is it possible or not? Profile plane. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Right? A square ABCD is perpendicular to both the planes in this case. So what will be its front view and top view? What you will see? A line. Line. Obviously, it will be a line. So when you extend this AD part, AD here, on the vertical plane, what you will get? You will get a vertical trace. Trace, have you studied traces? No, sir. No, okay. So traces are nothing but when you extend the lines here, extend this part on the reference plane, when it will cut the reference plane at whatever shape, that will be known as the traces. So when it will cut the vertical plane, it will be known as vertical trace. And when it cuts the horizontal plane, it will be called as horizontal trace. Okay. When it will meet the reference planes. समझ आया? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You need to extend the edges, and wherever it meets the reference plane, that is known as traces. तो यहाँ traces का इतना यूज नहीं है, lines में ज़्यादा है, तो lines में maybe sir will teach you once again the traces, so it will be clear to you. Okay, so see here, perpendicular to one plane and parallel to the other plane. So see this triangle one, this one. इसमें क्या दिख रहा है? The triangle is parallel to which plane? Vertical Vertical. Triangle is perpendicular to the vertical plane and horizontal, parallel to the vertical plane and perpendicular to the horizontal. Plane. So you will get traces in which plane? You will get Horizontal traces trace. only in horizontal plane. That will be known as HT. See here. Top view में दिखेगा line. Is it clear? You will not be getting any vertical trace here because the plane is parallel to the vertical plane. तो कभी meet होगा क्या? Will this plane ever meet a vertical plane? No, sir. कभी नहीं No, होगा sir. ना? No, sir. It will never. Similarly, see this second case. यहाँ पे क्या हो रहा है? It is perpendicular to the vertical plane and parallel to the horizontal plane. So you will not get any horizontal trace in this case, right? तो एक चीज क्लियर है, अगर पैरेलल है किसी भी प्लेन के तो हमको वर्टिकल ट्रेस ट्रेसेस नहीं मिलने वाले हैं. Is it clear? उस पे स्ट्रेस नहीं मिलेंगे. Yes, sir. Okay. Next, perpendicular to one plane and inclined to the other plane. क्लास चालू है मैं, ठीक है? समझ आ रहा है? See this case, the upper one. It's In this perpendicular to case, HT and inclined is the plane is perpendicular to horizontal plane. inclined to Yes, sir. vertical And plane. inclined to Vertical. Vertical plane. vertical plane. Very good. And in the second It's case, inclined to it is perpendicular Inclined to vertical plane horizontal. and inclined to the horizontal plane. So you will get HT and VT in both the cases, isn't it? At any point of the time, they will meet reference planes. I hope it's clear. Yes, sir. Okay. The difference comes here is that
Okay, see this triangle. Okay. Triangle दिख रहा है? Triangular plane. So when you are projecting it onto the reference plane, are you getting the true shape in the projection? Are you getting what I'm trying to say? Yes, sir. क्या हुआ समझ नहीं आ रहा? What I'm asking is, see this plane. This plane is parallel Vertical to the plane. vertical plane. So when I am projecting it onto the vertical plane, am I getting the true shape in projection? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we will get. You will get. Okay. What about in this case? No, sir, not true shape. You will not get the true shape. You will get an Reduce apparent one. apparent Yep. shape, which will be smaller Mhm. than the true shape. Again, take it that way. Yeah. Am I correct? Yes. Yes. Yes, sir. ठीक है ना? ट्रू शेप से बड़ा शेप Nah. कभी आ सकता है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. It's not possible. Always remember, you need to start your problem with the true shape. Always. पहले हम ट्रू शेप से शुरू करेंगे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना. That is a very important thing. Then we'll rotate in horizontal axis and vertical axis, whatever we want. Okay. Oblique planes. It is simple. Planes which are inclined to both the planes are called oblique planes. ये case possible? Perpendicular to both the Yes, planes. sir. Like lines inclined to both the planes you have already studied. Similarly, planes inclined to both the planes. That is known as oblique plane. Now in this case, it is inclined to which Only plane? one plane. It is inclined to only one plane. Which plane? Or vertical plane? Okay. अब मैं इसको अगर यहाँ से झुका दूँ इस side, if I turn it like this, then it will be inclined to Vertical horizontal plane. plane as well as vertical plane, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. So that will become a case of sir. plane inclined to both the planes. So this is a repeated thing. Let me read it out fast. When a plane is perpendicular to both the reference plane, its traces lie on a straight line perpendicular to xy. True? Right? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Please read it with me. Okay. When a plane is perpendicular to one of the reference plane, its trace upon other plane is perpendicular to xy, except when it is parallel to the other plane. Okay, you just read it down. I'll give you 2 minutes and cross check it whether all the cases are correct or not. Yes, sir. I guess we have discussed all the cases. There will be no trace on that plane when it is parallel. Okay. The plane is inclined to match P. Projection. Sir, can you show a diagram for oblique planes? Oblique plane, when plane inclined to both the planes, we'll solve the problems. Don't worry. Okay. Sir, the fifth point is given that, sorry. So when plane has two traces, they produce, if necessary, intersect in xy, that except when both are parallel to xy. Sir, so the plane would be how should I? Plane should be Okay, sir. 3D. Okay, sir. Yes, I get this. Okay. Projections. When a plane is perpendicular to a reference plane, its projection on that plane is a straight line, obviously. When a plane is parallel to a reference plane, its projection on that plane shows its true shape and size. Yeah. Clear? When it is parallel to a reference plane, it will show the true shape and size. When a plane is perpendicular to one of the reference plane and inclined to the other,
its inclination is shown by the angle which its projection on the plane to which it is perpendicular makes with xy. Its projection on the plane to which is inclined is smaller than the plane itself. This we have already discussed. Apparent shape and true shape. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is the first problem. You need to solve it now. Take a pen and copy and do it. Show the by means of traces each of the following planes. Perpendicular to HP and the VP. We have discussed. इसमें क्या बोला है इसमें? एक XY line बनाओ and show by means of traces each of the following planes. Right? तो कैसा बनेगा? Perpendicular to HP and the VP. The first will be something like this. So cuboid. No, we need to show it by traces only. This trace Okay, sir. is this trace. This is known as vertical trace, and this is known as horizontal trace. Isn't it perpendicular to the HP and the VP, the plane? If I'm talking only about the traces. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And in the second case, perpendicular to the HP and inclined at 30 degree to the VP. Perpendicular to the HP means you will get a straight line in vertical plane. No. Hoga? Perpendicular to HP means what you will see? A straight line on VT, vertical plane. HP. Yes. Yes, sir. And inclined at 30 degree to the VP. Now the plane is inclined at 30 degree to the vertical plane. तो ये कहाँ दिखेगा हमको? Horizontal plane. ऐसा कुछ दिखेगा? Yes, sir. ऐसा कुछ दिखेगा? Right here VT here. देखो समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And Yes, sir. Sir, inclined plane is always exist in profile plane. No, it's not necessary. What is the definition of a profile plane? It lies in between middle point of the XY plane, like that. What about this case? Is this a profile plane? No, this is not a profile plane. प्रोफाइल प्लेन की डेफिनेशन क्या होती है? तो वैसा प्लेन जो XY प्लेन के बीच में ही क्रॉस करता हो. बीच में क्रॉस करता हो. या तो यहाँ पे हो रहा है क्या ये? नो सर, ये तो परपेंडिकुलर प्रोफाइल प्लेन क्या होता है? प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द कोऑर्डिनेट प्लेन्स. यही होता है ना, दोनों के परपेंडिकुलर जो होता है, दैट इज अ प्रोफाइल प्लेन. सो इजंट इट दिस वन अ प्रोफाइल प्लेन, एवरी वन ऑफ यू? Yes, sir. बाय डेफिनेशन. Yes, sir. Yes. Yes, sir. How about this? Is this perpendicular to both the planes? No. No, sir. Perpendicular No, to only one plane, so it cannot be a profile plane. ठीक है? यस सर. Okay, next. I hope it's clear. Profile plane Yes, is a plane which is perpendicular to both the reference planes. Okay. Third case. Parallel to and 40 mm away from the VP. Means it is parallel to VP. One thing is sure. Yes, sir. ठीक है? ठीक है ना? Parallel to VP means you will get traces where? Horizontal trace. On the horizontal plane. So in horizontal. plane. Horizontal plane. Yes, sir. plane में मिलेगा. On the horizontal plane. ठीक है? And it Under 40 mm. mm above. Under 40 mm. So ये जो distance है, that will be 40 mm. तो ये 40 ऐसा mm. Yes, sir. This line will extend from infinity, right? Negative. yeah. It's a parallel. ऐसा कुछ दिखेगा तुम्हारा HT and there will be no VT. Yes, sir. Yes. Clear?
Yes, sir. Inclined at 45 degree to the HP and perpendicular to the VP. अब perpendicular to the VP है तो हमको कहाँ दिखेगा ट्रेस? स्ट्रेट VP लाइन पर VP पे दिखेगी, तो VP पे तो हमने बना लिया एंड सॉरी HP पे बना लिया. अब VP पे क्या दिखेगा वर्टिकल प्लेन में? एक इंक्लाइन ट्रेस दिखेगी हमको एट 45 डिग्री. 45 degree. Clear? Parallel to the HP and 25 mm away from it. तो ये कहाँ दिखेगा? Parallel to HP means it will cut the vertical plane. It will cut the vertical plane. Above Yes, sir. above 25 mm. Up 25. So this will be a No VT and there will be horizontal press. no HT. Yeah. I hope I am clear. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे देख लो आप. दिख रहा है? Yes, sir. Clear everyone? Sir, the Yes, D sir, diagram could have been mirror imaged, and that would also be correct, right? Which one? So the This D one? diagram. D. Yeah, obviously. This one also. यहाँ भी. एक मिनट. Yes, sir. Yeah, it depends. नीचे कहता है. 45 डिग्री आप कहीं से भी ले Yeah, सकते that's right. No. हो. Doesn't matter. कि vertical press में So ये सिर्फ example है it's the intersection projection with the का. plane, right? ये कुछ एक distance पे रखा हुआ है plane. Suppose Okay. 40 mm. तो So here you are getting traces, and there you are getting projection. So in which plane you are getting the true Vertical shape? You are plane. getting the true shape in vertical plane, and the plane is kept on. The horizontal plane is kept on horizontal plane. Horizontal plane. Okay, ठीक है. So when question says that a plane is resting on horizontal plane, so this will be the case. Okay, so you will get the true shape in vertical plane. Similarly, this one. समझ आ रहा है? Yes, sir. We have discussed Yes, this sir. already. Yes, sir. Inclined वाला है ये case. Sir, in this case, plane is resting on which plane? In this case, it is resting on Vertical or horizontal? Inclined. It is resting on horizontal plane. Why? Because there is a gap here. Okay, sir. Sir, if there is no gap, then It will be given in question. Else it will be on XY plane itself. If no gap was provided, then it will be said that it's resting on reference axis like this. You can get the question. If there is no gap, then it is on reference axis only, no? But the certain other conditions will be provided to show you where actually it is kept, in which plane you are getting the true shape. So you will be having some or the other conditions there. So don't worry about that. But Sir. as far as this is concerned, it is very clear that it is resting on horizontal plane. Sir, if the distance is not given from horizontal plane or vertical plane, then by Then you default can we should assume. take 0. No, not necessary. You can take some distance as well depending on the question. If it is not mentioned on question, you are free to use. You can keep it on XY plane, or you can have some distance as well. Okay, it is not always necessary. Clear? Is it clear? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This case. It is again resting on the horizontal plane, but it is inclined to the vertical plane. Now this will be the case of oblique plane, inclined to both the planes. Okay. So let's come to the question part now. We'll start with some basic question. Draw the projections of a circle of 50 mm diameter, having its plane vertical and inclined at 30 degree to the VP. Its center is 30 mm above the HP and 20 mm in front of the VP. Show also its traces. All of you are having a pencil and a notebook or a pen and a Excuse me, sir. notebook? Yeah.
Sir, someone is asking to join the class. Please let him Sure. admit. Okay, I have admitted them. Take your pen and notebook and try to start drawing the problem. सबसे पहले रेफरेंस प्लेन तो बना ही सकते हो, आई गेस. XY लाइन. चलो Yes, XY sir. लाइन. Draw XY line. Draw a XY line. ठीक है. Now, what is the diameter given? It is given 50 mm, having its plane vertical and inclined at 30 degree to the VP. तो हमको ट्रू शेप कहाँ मिलेगा? In the horizontal plane or the Horizontal plane. true shape? So true shape will be vertical plane and trace would be horizontal plane. Yes, very good. समझ आ रहा है? Yes, sir. So what do we define as true shape, sir? Exact dimensions match होने चाहिए ना? Obviously, Right. obviously. So true shape में अगर हम I am not talking about the final shape. Initial आपको शुरू करने के लिए आपको true shape से शुरू करना है. You have to always start with the true shape that I already told you. So yes, sir. One thing is sure that the traces will be on the horizontal plane. Sir, the projection of this circle on a VP will not be a circle. Obviously, final projection. Final projection. Yes, sir. Final projection will not be a circle. It will be something like an ellipse. Yes, sir, like an ellipse. Yes, I'm happy that you are getting that much imagination as of now. Okay, so one thing is sure that this will not be a circle, right? But to get that the final shape, you have to start with the true shape. Okay. Yes, sir. So let's confirm one thing that you will be having a circle in vertical plane and a line on horizontal plane. Yes, sir. समझ आ रहा है what I'm trying to say? Yes, sir. Yes, sir. Yes. This thing is sure? Yes, sir. Yes, sir. Very good. ये कैसे हमको पता चला? क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल प्लेन की बात हो रही है. Therefore, it is resting on. So how we'll start? We'll start with the reference plane. Now what it is said that its center is 30 mm above the HP. ठीक है? Its center is 30 mm above the HP. तो हम यहाँ पे center mark करेंगे circle का. That will be 30 mm above. Isn't it? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now what is the dimension of the circle? The diameter is 25 centimeter is radius. 50 is 25 diameter. centimeter is radius. So we will draw a circle something like this. ठीक है? So this is a true shape as of Yes, now. sir. Okay. So what we do next? We divide it in 12 equal parts. I hope you have studied this. Yes, sir. ठीक है? Now, second thing, what it is given? It is 30 mm above the HP and 20 mm in front of the VP. ठीक है? तो front of the VP का मतलब यहाँ से हम 20 mm लेंगे. We'll take 20 mm from here. ठीक है? And what you will get here? You will get a trace here. Trace of this circle. Yes, sir. A Yes, line sir. of 50 millimeter length. A line of 50 mm length. ठीक है? I have drawn a rough line to show you something. Now what you will do here? Just a second. You will project these points here. ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे.
ठीक है? And what you do here is that you need to give nomenclature to these points. So on front view we give dash, Yeah. right? देते कि नहीं देते? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देते ना? Yes, 1 sir. dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash, 5 dash, 6 dash, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 dash. ठीक है? So you will get 1 here and 7 here. Yes, sir. This is center. यहाँ पे आपका क्या आएगा सेकंड पॉइंट में 2 dash 2 and 2 comma 12. Yes, sir. 2 पॉइंट मिलेंगे आपको यहाँ पे. यहाँ पे क्या मिलेगा 5 and 9 and यहाँ पे 6 and 8. Yes, sir. This is clear. It will be clear, don't worry. ठीक है? यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है 50 mm. Now what it is said? Having its plane vertical and inclined at 30 degree to the VP. तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट? इस प्लेन को हम यहाँ से 30 डिग्री इंक्लाइन कर देंगे. ठीक है? दिस विल बी 30 डिग्री इंक्लाइंड. और हम क्या करेंगे इसके बाद? We'll mark all the points here again. 1, 2, 3, center. Then whatever points we have. Last point is 7. ठीक है? And we'll again project it back here. यहाँ से हम वापस इसको प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ पे सारे पॉइंट्स को और यहाँ से भी सारे प्रोजेक्शन पॉइंट्स ले लेंगे. ठीक है? और जहां भी हमको इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे वहां पे हम ये एलिप्स ड्रॉ कर देंगे. आई होप इट्स क्लियर. Yes, sir. Yes, sir. Procedure is clear. Diagram it will be better in the next slide. You have already seen. Procedure is clear. Yes, sir. Yes, sir. So the inclined line is 50 mm, right? Inclined line is 50 mm. The 30 degrees inclined Yes, line. yes. And it has points at the same distance as it is in the projection we made. Yeah, obviously. Imagine करो ना उसका diameter थोड़ी change हो जाएगा. You'll still be getting the same length of diameter in projection on top view. Imagine करो ये चीज. This is a very important thing that he has asked. कि इसकी length 50 mm रहेगी या shorter रहेगी. This is what you are asking? No, sir. उसकी 50 रहेगी, sir. What you're trying to ask is like उसका length 50 बना My के. question was, is it same as this? Like the previous line we drew after projection, we marked Yeah, the its points. length will be The points same also same. because it is still perpendicular to the vertical plane. If it was inclined to horizontal and vertical plane both, if it was inclined to both the planes, then it is not necessary that it is of 50 mm. It might be of shorter length. Sir, so when you say that you have to draw this 50 mm line and mark the points 1, 2, 3, like again, that means we have to take this projection line के से मतलब we'll take the dimensions and then we'll mark again. For the sir. projection. Yeah. ठीक है. Same to same. Same copy Yes, sir. करना. Yes, sir. See here. Now it's much better here. The I hope it's projection getting and clear these are now. the traces, right? Sir, what about distance of inclined line from XY? Yes, sir. Inclined line वो initially आपको This दिया of था the वो आपने traces and पहले this is केस में line. कर लिया. That is This and okay. this. Second केस में भी आप Those are यहाँ the से 20 mm traces लेंगे and that will be better. Those are the traces. Yes, sir. This is going to be your final projection. We will consider more on this. ठीक है? This is given on a step. This is given on a step. There is nothing mentioned about this thing, but try to make it 20 mm as well. ठीक है? This distance, keep it 20 mm only.
ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है ना उसके बारे में. 20 mm in front of the VP. Sir, should not that point O must be 20 Center millimeter is from 20 mm. Sir, center should be 20 mm from XY. Yeah. Yes, you are correct. You are correct. This thing should be 20 mm. This length. Okay? Okay, sir. Clear now? आप यहां से रोटेट करिए इसको. ठीक है? Clear? Yes, Yes, sir. sir. So in projection of planes, what is usually asked? We ask you to draw the projection, means front view, top view, and side view. What will be given in the problem? Description of the plane figure, its position with HP and VP. In which manner its position with HP and VP will be described? Inclination of its surface when one of the reference planes will be given. Inclination of one of its edges with other reference plane can be given. तो या तो आपको सरफेस के बारे में बताएगा या एज के बारे में बताएगा. ठीक है? This we have already discussed. अब बताओ इसमें नया क्या है. This is very interesting slide and very important one. देखो अभी तक हमने ये वाला केस डिस्कस किया है. The third one is new. ठीक है, ये वाला केस we have discussed already. Surface inclined to HP, pictorial presentation. ठीक है, means the plane was inclined to only one plane. Isn't it? Every one of you, please pay attention. Please pay attention. ठीक है, अभी इस केस में क्या हो रहा था, हमको ट्रेस मिल रहा था वर्टिकल प्लेन में. इज इट क्लियर? यहाँ पे हमको ट्रेसेस मिला सेकंड केस में, केस नंबर 2. Now what will happen if I turn it around like this? If I turn it around like this, am I making an angle with the vertical plane? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Initially, it is making an angle with horizontal plane. Initially, it is making some angle with the horizontal plane, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ लो, ठीक है. अब now what I am doing is that now I am rotating it like this. If I am rotating it like this, I am making a new angle with which plane? Vertical plane. What about horizontal plane? If it was 30 degree, will it remain 30 degree only? yes, the same. Yes, sir. Every one of you, please pay attention. It is very important. ठीक है? So I am rotate. HP will be same. Inclination of HP will be same, but I am making a new inclination with VP. So if I am making a new inclination, say 20 degree, so now it is 20 degree inclined to VP as well as 30 degree Yeah. inclined to HP. Yeah. Correct? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. When I rotate it 20 degree, this angle is still 30 degree. So I'll be getting some figure like this. We'll start seeing some Yeah. rhombus kind of thing. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Visually clear हो रहा है थोड़ा? Yes, अभी sir. कोई है Yes, जिसको sir. समझ नहीं आया, Yes, please sir. ask me. This is a Clear. very important thing. This thing especially because it will remain 30 degree only. You are just rotating it with vertical plane only. The horizontal plane will remain same. So this locus will remain same. ठीक है, अब यहाँ नीचे वाले केस में देख लो एक बार. 1, 2 and 3. Yes, sir. नीचे वाला केस समझ आ रहा है? What now it is doing? Initially we have made an पहले हमने true shape लिया in first. In second what we did? We did some Horizontal inclination plane. with horizontal plane. Mm-hmm. Here.
हाँ या ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Second Yes, sir. case में we have inclined it to horizontal plane, and now in third case, keeping the inclination with horizontal plane constant, we rotated it in vertical plane. ठीक है? Then you get Yes, sir. this shape. Yes, sir. I hope it's clear now. So here it is some procedure, standard procedure, but it's more important to understand. Assume suitable condition and draw front view and top view of initial position. Now consider surface inclination and draw second front view and top view. After this, Now consider consider side edge surface inclination and draw third final front view Now and top consider view. the surface inclination and draw the second front view and top view. Means पहले एक surface से incline करेंगे, फिर हम दोनों surface से incline करेंगे. So we will be having 3 steps. As of now, we had only 2 steps. In surface planes inclined to both the reference plane, we have 3 steps. Okay. Yeah. Right? Chalo. Read this problem. And try to imagine it. चलो पहले स्टार्ट करते हैं. क्या दिया है बेसिक्स हम समझते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं. रेक्टेंगल दिया है 30 mm एंड 50 mm साइड विच इज रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन. कहाँ पे रेस्ट कर रहा है? Horizontal. कहाँ पे आएगा? Where will get the true shape? Vertical, sir. Vertical plane. कहाँ से वर्टिकल पे आएगा? Horizontal. भाई जब प्लेन ही एचपी पे रखा हुआ है तो तुमको वीपी पे कैसे दिखेगा? प्लेन इज रेस्टिंग ऑन एचपी पे दिखेगा ना, तो तुमको टॉप व्यू में दिखेगा ना रेक्टेंगल कि फ्रंट व्यू में दिखेगा? Top view. में दिखेगा. ठीक है? Every one of you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now read it again. Rectangle 30 mm by 50 mm side is resting on HP on one small side which is 30 degree inclined to VP. While the surface of the plane makes 45 degree inclinations with HP. Draw its projections. चलो स्टेप्स बताओ. सबसे पहले स्टेप्स क्या करोगे? इतना तो करोगे. ठीक. फिर you will draw the true shape. ट्रू शेप ड्रॉ करोगे? Yes, sir. Yes, sir. ट्रू शेप कैसा आएगा? स्मॉल साइड ऐसा रहेगा, लॉन्ग साइड ऐसा रहेगा. पढ़ोगे तो समझ आएगी ये चीज. अब देखो, someone was asking whether we should keep it on XY plane और यह distance कितना लेगा. In this case, it is not mentioned anything about this distance. दिया है क्या? No, sir. No, sir. दिया है तो हम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं. We are free, but it is better to have some gap here. ठीक है? Now, rectangle 30 mm by 50 mm sides is resting on HP on one small side. One small side. मतलब ये वाला जो side है, this is resting on HP on the final view also. ठीक है? Yes, sir. स्मॉल साइड वो हमेशा ही रहेगा HP पे. ये वाले जो बाकी साइड्स हैं वो ऊपर नीचे होंगे, पर हमको एक चीज को फिक्स रखना है. राइट? फिर हम इसका क्या करेंगे? नेक्स्ट विल ड्रॉ द फ्रंट व्यू ऑफ इट. फ्रंट व्यू में क्या मिलेगा हमको? एक 45 की स्ट्रेट लाइन मिलेगी. यस मिलेगी? Yes, sir. Yes, sir. मिलेगी ना? नहीं 30 mm की A डैश, B डैश, C डैश एंड D डैश. इसको यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे हम ऐसा करके. नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम?
Just incline it. While the surface of the plane makes 45 degree inclination with HP. तो हम यहाँ पे 45 degree inclination with HP दिया हुआ है. तो which will be an easier step to follow? Inclination of 45 degree. Vertical projection को 45 degree wheel. Very good. Very good. Because surface is inclined to which plane? Horizontal plane. Assumption for initial position Yeah. parallel to HP we have taken. अभी हमने parallel to HP लिया है. Yes. Yes, sir. लिया है. So it will be easier to start with inclination with HP. So हम क्या करेंगे? ये वाली लाइन को हम 45 डिग्री इंक्लाइन कर देंगे. ठीक है. Mark all the point. B dash, A C dash, dash, D dash. B dash, It will make an C angle of dash 45 and degree. D dash. और इसको हम वापस नीचे प्रोजेक्ट करेंगे. ठीक है. और इसको यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे. Just make an interval. तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? एक शेप मिल जाएगा. This rectangle is now 45 inclined degree at with horizontal plane. 45 degree Yeah. with Yes, sir. HP, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. एक कंडीशन तो हमने फॉलो कर ली. Yes, sir. कर ली कि नहीं? अब हमारा काम क्या बचा है? Now हमारा काम ये दिया हुआ है 30 कि degree inclined with now it is vertical 30 degree inclined to the VP. अब इसको हमको 30 degree inclined to VP करना है. तो उसके लिए क्या करेंगे हम? जो एज है उसको उठाओ, AB एज उसको उठाओ और यहां से एक 30 डिग्री की लाइन खींचो. ठीक है. और यहाँ पे मार्क्स कर दो पॉइंट A1, B1. इसको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं आप. सेकेंड वाले केस को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं आप एट 30 डिग्री. C1 एंड सेकंड वाले केस को रिप्रोड्यूस करना है, लाइक डुप्लीकेट करना है. और इसको आप वापस प्रोजेक्ट कर दो. और यहाँ से जो जो पॉइंट मिल रहे हैं उसको आप मिला दो. सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा फाइनल शेप. ठीक है. कुछ समझ आया? Sir, can you repeat the last step? Which one? 30 degree one? Yes, sir. 30 degree. Sir, we can take 30 degree on another side also. Other side as well, obviously. पहले क्या बोला था? Is resting on HP on one small side which is 30 degree inclined to VP while the surface of the plane makes 45 degree inclination with HP. तो हमने पहले HP वाला ड्रॉ किया, उसके बाद इस फाइनल सेकंड वाले इमेज को 30 डिग्री पे रोटेट कर दिया एंड वी गॉट द थर्ड व्यू. और इसको ऊपर प्रोजेक्ट किया तो वी गेट द फाइनल व्यू. सिंपली इसको ऐसे 30 डिग्री घुमा एंड जस्ट ठीक. चलो इसको फाइनली वहां पे देखो तो आगे समझ आएगा. and just project the points upward and this horizontally as well and vertically as well, and the point of intersection will give you the final projection on the vertical plane as well, right? ऐसे पॉइंट्स मार्क किया हमने, ABCD प्रोजेक्ट किया. विल गेट द ट्रेस. We have considered surface is parallel to HP. Now इसमें दिया हुआ था 45 degree inclination with HP. The surface is making 45 degree inclination with HP. तो हमने इसको पहला क्या किया? 45 डिग्री पे इंक्लाइन किया, surface inclined to HP कर दिया. फिर उसको then again we projected it down and we got the view on top view. Now it was said that the small side is 30 डिग्री इंक्लाइन टू VP. तो फिर हमने क्या किया? इसको 30 डिग्री पे रिप्रोड्यूस किया सेकेंड व्यू को. और वापस इसको हमने ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया लाइक दिस. सो वी गॉट द पॉइंट्स हियर. Got the steps? Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ सीखने वाली बात बस यही थी कि आपको पहले पता होना चाहिए कि व्यू हमारा जो ट्रू शेप है वो कहाँ पे मिलेगा, और उसके बाद हमको पहले कौन सा इंक्लाइन करना है, एचपी पे कि वीपी पे। एचपी पे हमेशा। रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 डिग्री सेट क्या? स्क्वायर जानते हैं आप लोग सब? Yes, sir. जानते हैं ना? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. So the problem is a 30 degree 60 degree set square. This is a type of set square कि एक साइड उसका 30 डिग्री होता है, एक साइड उसका 60 डिग्री होता है, ठीक है। Of longest side 100 mm long is in VP and 30 degree inclined to HP, while its surface is 45 degree inclined to VP. Draw its projection. कहाँ पे रखा हुआ है सेट स्क्वायर, पहले यही बता दो। वीपी पे रखा हुआ है। In VP. Vertical plane. वेरी गुड, Vertical plane. इतना तो क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ट्रू शेप फ्रंट व्यू में बना। तो हमारा ट्रू शेप कहाँ मिलेगा? Where we'll get the true shape? Vertical We'll plane. get the true shape on vertical plane. Vertical plane. और इनिशियली हम उसको कैसा एज्यूम किए हैं? Parallel इनिशियली to we will vertical assume it plane. as parallel to हाँ? HP. Yes, sir. इनिशियली तो वैसे ही करते हैं ना, हम वही करेंगे हम। अगर वो पैरेलल नहीं रहेगा तो ट्रू शेप कैसा रहेगा? दिस इज आल्सो वन मोर थिंग। Sir, perpendicular to HP. Sir, parallel to VP होगा sir. पैरेलल टू VP, Yes, sir, it will be पैरेलल टू parallel VP to हाँ, and वही तो। perpendicular to HP. I can Yes, sir. and see that it is So पहला स्टेप going आप लोग को to आई गेस be समझ आ गया है ना? kept on the Now, मतलब it is what you will do in beyond next step? VP, so I'll keep it parallel to VP. While its surface is 45 degree inclined to VP. Now, if we want to make it inclined to VP, तो मैं क्या करूंगा? उसको ट्रेस को रोटेट Yes. कर दूंगा 45 डिग्री पे, Yes, sir. and I'll reproduce it. Yeah. ठीक? चलो शुरू करो। ये आप लोगों को इतना समझ आ गया था। ठीक। इसको हमने प्रोजेक्ट किया सरफेस पैरेलल टू वीपी, ऐसा राइट? कैसा इसके रखा? बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हमको क्या करना इजी रहेगा? चलो ये बताओ। इस कैन वी रोटेट इट डायरेक्टली दिस हाँ। थिंग? No, we'll rotate the. It won't be easy, but it is easy to rotate this thing, Yes, sir. obviously. And now if I rotate this thing, I am making inclination Vertical with plane. which plane? VP. VP. To read this line, its surface is 45 I'll degree rotate inclined it to by VP. 45 degree. ठीक है? Yeah, you I can go for this step. It is 100 millimeter Yes, long. sir. This is like Yes? this, and I have Yes, to sir. be clear. Good to go. Yes. इसको रिप्रोड्यूस कर And सकते हैं हम? just reproduce. अभी क्या अब क्या बोला पॉइंट है? ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा प्रोजेक्टर्स में अब ना क्या बच सिर्फ गया? पॉइंट ऑफ What इंटरसेक्शन is से कर remaining? लेना चीजें 30 degree to HP. 30 degree. While set square of longest side 100 mm long is in VP and 30 degree inclined to HP. अब इसको हमको 30 डिग्री इंक्लाइन टू HP करना है। कैसे करेंगे? किसको करना है और विच साइड? 100 mm लॉन्ग साइड। Longest side. लॉन्गेस्ट साइड को रोटेट करना है ना हमको, राइट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. I will rotate this edge at 30 डिग्री। रिप्रोड्यूस करूंगा मैं इसको 30 डिग्री पे। सी I reproduce this shape at 30 degree. Any doubt here? It in the No, sir. anti-clockwise direction 30 degree. Longest side is now at 30 degree to vertical plane.
No, sorry, horizontal plane, 30 degree inclined to horizontal plane now. Okay. Yes. Now I will reproduce 30 it degree to the again. horizontal plane. Got it. So this is my final view. Yeah. Any doubt here? Sir, here FV means, sir? Huh? So here FV means, Front view, front view, okay, sir. front view. So how did we assume the initial orientation of the shape? Yes, sir. Initial orientation? Which one? So like Sir the means first which one, how side did is we to be assume that A dash B dash should be perpendicular to XY? और क्या assume करोगे बताओ? How can you assume it? So we can take any side to be perpendicular to XY, right? देखो इसमें क्या लिखा है? A 30 degree 60 degree set square of longest side 100 mm is in VP. Which side is in VP? But sir, there's a comma as well over there. No, no, don't go like that. 100 mm long is in VP. So this side is on VP ना? This is on vertical plane. आपको इसको नहीं हिला सकते आप. This will always rest on vertical plane. Now, if I am drawing this shape, I am moving this up and down. Are you getting in 3D, 3 dimension? Just assume it. Longest side, keep it on your table and move the corner one, the third one, up and down. You are doing that only. Am I making some sense? Yes, sir. समझ आ रहा है कुछ? हाँ सर, समझा. समझ आया? Yes, sir. Longest Yes, साइड Yes, को sir. आप टेबल पे रख दो. वो बोला है इसमें टेबल पे रख दो. और जो थर्ड साइड बचा कॉर्नर वाला उसको ऊपर नीचे कर रहे हो बिकॉज 100 mm लॉन्ग साइड इज इन वीपी. यू डोंट हैव दैट मच फ्लेक्सिबिलिटी. वो तो वीपी पे ही रहेगा. ठीक ठीक है. Yes, sir. एनी अदर डाउट? Any Sir, other doubt? sir, and we rotate by keeping the center at the same point. Which center? Sir, if we rotate a line, for example, AC, then we keep the center at the same line and we rotate it by 45 degree. Yeah, AB will be there only, always will be there. You are rotating with C only. When I am getting it inclined, what I am doing? I am moving the point C only, na? I hope it's clear to most of you. एक और क्वेश्चन है सेट स्क्वायर पे, वो देख लेते हैं. Then it will be more clear. Okay? चलो ये वाला क्वेश्चन करो. Read this question and try to understand the difference between both the problems. Are you reading? Yes, sir. What about others? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So can you go to the previous question? Sure. So over here, so first like we are drawing small AC, we are taking it out, and then we are inclining that small AC length 45 to the XY line, and then the distance we get as the new sir. उसके बाद से what are we proceeding? So एक बार explain कर दीजिए. First, we made it inclined to VP. Yes, sir. 45. And we got a final shape which is inclined Yes, to sir. VP. And Yes, now sir. we have rotated that shape on 30 degree and we have reproduced the top view. This is what we have done.
So we are noting down the dimensions. Last problem I'll show you with the help of one software. Okay, so how it is going. So maybe you'll get that imagination. Sir, the usage of drawing first 45 inclined to VP, that by that method we are actually like figuring it out, like that C dash changes to C dash 1, and then using that C dash, that new figure, we'll note the whole dimensions of that and just simply place A dash 1 and B dash 1. Yes. These both figures are same. Same, yes, sir. These So are we'll just we'll recreate that figure 30 degree inclined to XY. Yes. You are very correct. Okay, sir. Yes, sir. It is replica. Both the figures are replica. Even in the last question, it was replica. Yes, sir. And we can type angle from right side also. I have already told you many times. This can be from, you can take it from left or right. It depends entirely on you. ये जो है, this one is a replica only. See, what you can do here is that just take a set square. I hope most of you must be having a set square in your old geometry box. Yes, sir. Yes, sir. Keep it like this in the same, create a similar setup there and try to understand what the problem is trying to say. This step is very clear. Okay? So this step is similar to what we have done with the line. Yes. And because this step, in the next step, you need to make it 30 degree inclined with the VP as well. अच्छा, एक बात बताओ मुझे यहाँ पे, if this is 30 degree inclined to HP, this side is inclined to HP. Yes. ठीक है? What about VP? What about VP? Isn't it inclined at 45 degree to VP as well? Yes, sir, because the new dimensions of this 30-60 set are not the original. We have actually inclined it back, taking C dash 1 as a point and 45 हम plane के बाहर ला चुके हैं उसको. चलो एक को तो समझ आया है. बाकी बताओ. We'll stop here until everyone gets this thing. देखो, please listen everyone. If I make a dimension that is different from this number 2 dimension, if I do not replicate this dimension, this thing is sure that the inclination with HP will not be 45 degree. But if I am replicating it, then it will be surely inclined at 45 degree to VP. ये चीज को थोड़ा सा imagine करना पड़ेगा. Sir, in the third diagram, can you show what is actually the surface in the third diagram which is at 45 degree? Can you please mark it in the third diagram? Surface. I don't understand what you are trying to say. No, the question is the surface is 45 degree inclined to VP. So in third question, this is the surface is inclined to 45 degree to VP. A dash, Yes, sir. B dash, C dash, the entire thing is inclined. Yeah, that whole surface is inclined. But A dash, B dash is resting on VP. So could the process have followed when we first draw 30 degree inclination to HP and then make it out of the plane? नहीं, कैसे करोगे तब? कैसे करोगे? Difficult होगा करना. कैसे करोगे? मेरे को बस एक चीज बताओ, बस if you get one thing, why we are replicating this dimensions? अगर इतना समझ आ गया ना तो तुमको समझ आ जाएगा प्रॉब्लम. सर रेप्लिकेट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जो इस डायमेंशन सेकंड वाले डायमेंशन मैंने बनाया वो ऑलरेडी 45 डिग्री बाहर आ चुके हैं, तो अब वो वाले डायमेंशन हैं जब हम बोलते हैं कि हमारा प्लेन 45 डिग्री टिल्टेड होता है, मतलब हमारे रेफरेंस प्लेन्स मतलब वीपी, तो वो हमने काम कर दिया है. तो अब ये एग्जैक्टली वो वाला डायग्राम है जब वीपी 45 डिग्री टिल्टेड था, इसको हमने फिर 30 पे रोटेट करा दिया. इसका उल्टा कर सकते थे कि मान लो 30 पे रोटेट कराते फिर उसको सी पॉइंट से ऊपर करते हैं 45. कैसे करते बताओ ना, कैसे करते?
पहले तो मेरे 30 को पता नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सर, ऐसा हो नहीं सकता कर था क्या? सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सर ठीक है। नहीं कर सकते। लाइन से शुरू करना इजी होगा वही ना। नहीं कर पाओगे, दिक्कत होगी। अगर आपको थोड़ा सा लोकस का कॉन्सेप्ट समझ आता है ना, तो ये चीज तुमको समझ आ जाएगी बस। अगर अभी भी किसी कोई है ऐसा जिसको सर वही बात है, दिक्कत होगी या सर हो ही नहीं सकता। See, I have also not tried, but if I imagine it to solve according to that way, I think I'll get stuck somewhere. I'll do it in software, okay? I'll tell you. ओके सर। हाँ भाई, ऐसा I know more than 50-60% लोग को तो अभी भी समझ नहीं आया होगा। बोल दो भाई, नहीं समझ आया तो। I am very flexible teacher, ठीक है? Don't worry about that. I won't be harsh to anyone. सर आई हैव अ डाउट। सर वो जो 45 डिग्री एंगल का जो इंक्लिनेशन हुआ है, तो सर वो वीपी पे करना था, तो वो तो एचपी पे किया हुआ है ना सर? कैसे भाई? सर वो हॉरिजॉन्टल पे है ना, एक्स वाई प्लेन। हॉरिजॉन्टल पे, बट वो एंगल तो उससे बना रहा है ना, वर्टिकल से बना रहा है। इमेजिन करो भाई, वो परपेंडिकुलर है। इट इज परपेंडिकुलर टू एचपी एंड इंक्लाइन टू वीपी। देखो, अगर यहाँ पे मुझे ट्रेस दिख रही है, देन इट इज फॉर श्योर दैट इट इज एट 90 डिग्री टू एचपी। एम आई करेक्ट? यस सर। तो जब वो 90 डिग्री एचपी पे है, देन इट इज ऑलवेज मेकिंग एंगल ओनली विद द वीपी। ओके सर। हाँ, समझ आया? त्या मगमध्ये तुझी मजा। फिर और कोई? मुझे अभी भी अगर किसी को डाउट है कि हमने ये रिप्लिकेट क्यों किया, देखो इसको रट नहीं सकते तुम, क्योंकि ऐसे भी प्रॉब्लम है जिसमें रिप्लिकेट करने से काम नहीं बनेगा। अगर इसमें अभी किसी को डाउट है तो पूछ लो। नो सर, डाउट नहीं है ना? ठीक है। पहले हम एक सरफेस से इंक्लाइन करते हैं, फिर हम दोनों सरफेस से इंक्लाइन करते हैं। तो जो पहला को इंक्लाइन कर दिया है, अगर मैं उसका ओरिजिनल डायमेंशन नहीं लूंगा, देन इट वोंट बी इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। अगर मुझे उसको 45 डिग्री पे ही इंक्लाइन रखना है और नया एंगल पे रोटेट करना है, तो मुझे उसके ओरिजिनल डायमेंशंस ही रखने पड़ेंगे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। So you can, what you can do is, you can take a pic from your phone of this problem number 2. ले लो जल्दी से। ले लिया? सर यस ठीक है सर। हाँ सर, what about the distance? Distance is not given here na, in this case. So don't worry about that. Only this distance is given, a dash b dash. This is 100 mm. तो यहाँ पे आपको डायमेंशनिंग करनी पड़ेगी 100 mm की। ठीक है सर, तो ये जो फिगर है वो वर्टिकल प्लेन पे रेस्ट कर रहा है, तो लास्ट फिगर तो सही आ गया। Is there any distortion in my voice? नहीं, मेरे को तो नहीं आ रहा। हाँ ठीक है। लो सर ठीक है। यस बताइए। सर लास्ट वाले फिगर में जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बना है, वो तो एक्यूरेट है कि मतलब वो वर्टिकल प्लेन पे लाई कर रहा है, तो उसका कोई डिस्टेंस नहीं होगा, जीरो होगा। नहीं, वर्टिकल प्लेन पे नहीं, अभी वो दोनों प्लेन पे दिख रहा है ऐसा लाई करते हुए, बट इट इज शोर लाइंग ऑन वर्टिकल प्लेन। ठीक है, मैं उसको थोड़ा नीचे भी बना सकता था, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इफ आई हैव स्टार्टेड हियर लाइक दिस डॉटेड लाइन ऐसा करके, देन ये वाला भी फिगर नीचे आता कि नहीं आता? ओके सर, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है सर, ये जो हमने नहीं, डैश सॉरी वो ऐसा ही आएगा कि बिकॉज इट इज रेस्टिंग ऑन वर्टिकल प्लेन। सॉरी, फॉरगेट अबाउट दिस। हाँ, उस केस में फिर वो रेस्ट नहीं करेगा उस पे। सर इसमें सर हमने जो B1 और B-1 जो है फाइनल डायग्राम में, B- मतलब जो पूरा हमारा फाइनल 30 डिग्री इंक्लिनेशन वाला डायग्राम है, वो थोड़ा ऊपर बना है एक्स एक्सिस से। तो सर मतलब क्वेश्चन में तो ऐसा था नहीं कि लाइक हमें, बिकॉज़ अगर ऊपर बना है इसका मतलब है कि कुछ डिस्टेंस हो गया एक्स वाई। ऊपर का हमको कोई कुछ नहीं दिया हुआ है, बट नीचे का हमको दिया हुआ है कि इट इज रेस्टिंग ऑन VP, इज इन VP। मैं अगर इस वाले को नीचे बना दूंगा, देन इट वॉन्ट बी रेस्टिंग ऑन VP।
यस सर, ठीक है। Yes, sir. ऊपर वाले के Sir, बारे में हमको कुछ नहीं दिया हुआ है, so we do not worry about that. Sir, so in the first figure, that line we have made, it should also be made on XY line. No, it's not necessary. It is resting on VP. Okay, sir. That we have assumed. Okay. ठीक है, देखो इसका फोटो ले लिया आपने प्रॉब्लम की। सर बट जो ये वाली फिगर है ना सर, जो नीचे जो फिगर बनी है जिसमें A1 B1 XY भी बना है, ये 30 डिग्री इंक्लाइंड थोड़ी है, मतलब ये फाइनल फिगर थोड़ी है, फाइनल फिगर तुम्हारी ऊपर वाली है। ये वाली फाइनल फिगर है। हाँ Yeah, सर, ये वाली फाइनल फिगर। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, अगर ये वाली लाइन नीचे बनाते तो क्या होगा? दिस अच्छा, वाली नहीं तो सर वो line- ठीक है, मैं इस फाइनल फिगर की बात कर रहा ये हूँ। फाइनल तो यही है। वो हमने XY से थोड़ा ऊपर बनाया हुआ है। थोड़ा क्या, हमें इसको और ऊपर भी बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये इसलिए हो रहा है ना क्योंकि हमें मेंशन नहीं है कि एग्जैक्टली कितना ऊपर बनाना है, हम Obviously, कहीं भी बना सकते हैं। अब मैं इसको अगर टच भी करा देता, just टच करा देता तो भी ठीक होता। just listen to me dear, take a photograph of this problem. Have you taken? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखो, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें डायमेंशन दिए हुए हैं। यस सर, समझ गया। समझ गया? ठीक है, अब इसको पढ़ो। 30, 60 set square on the longest side. One of the longest side is 10 millimeter. क्या डिफरेंस है दोनों प्रॉब्लम में? सर हमें रेफरेंस लाइन से डिफाइंड है कि हमें कितना ऊपर नीचे लेना है। यही प्रॉब्लम थी ना? यस सर, समझ रहा हूँ। यही डाउट था? Yes, sir. यस सर। ठीक है, देखो 30 डिग्री सेट 60 डिग्री सेट स्क्वायर दिया है, लॉन्गेस्ट साइड 100 mm इज इन वीपी एंड इट सरफेस 45 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी, मतलब टू स्टेप्स आर सेम टू सेम। ठीक है, Yes, sir. एकदम सेम है दोनों स्टेप पिछले प्रॉब्लम से। Yes, sir. यहां तक सेम है। अब क्या बोला है? वन एंड ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज 10 mm एंड अदर एंड इज 35 mm अबव HP। जो ये लॉन्गेस्ट साइड है, इसका एक साइड 35 mm अबव HP है और एक साइड है, longest side is 10 mm above HP and the shorter side is End of the 35 mm. longest side is ठीक है? 10 mm, other is 35 mm. अब हम इसको क्या किए थे सेकंड केस में, थर्ड नेक्स्ट व्यू में इसको रोटेट किए थे। Yes, sir. Yes, sir. Okay. इस बार इसका डायमेंशंस दिए, नॉटिंग इम्पोर्टेंट, देखो अब एक पॉइंट हमने यहाँ पे क्या लिया, A1 डैश को नथिंग 35 mm इम्पोर्टेंट, अबव ले बस लिया जस्ट इसको रोटेट किया है। और B डैश को कहाँ सेम लेंगे ही है, हम, बस इस पर इसको दिया 10 है। mm अबव। ठीक, we have replicated like this okay. now and finally we projected it Yeah, down and we got got it. the final shape। ठीक, Yes, sir. Yes, समझ आ sir. गया अंतर दोनों प्रॉब्लम में? समझ गया। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे डिफाइन कर दिया है बट इट इज स्टिल रेस्टिंग ऑन वीपी, इसलिए ये वाला हिस्सा नीचे नहीं गया। दिस इज स्टिल ऑन XY लाइन। ओके, रेस्टिंग ऑन वीपी। यस सर। Yeah. क्लियर? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Clear. चलो ये वाला प्रॉब्लम ट्राई करो आप लोग। सर एक बार So प्रॉब्लम वाले please, पीछे can we take a break?
My head is about to burst. ठीक है सर. चलो, solve this problem. In HP, excellent. ओके, HP है, ये ऐसा है और ये फिर ऐसा है. समझ गया. हाँ, it's easy. You do that. हाँ भाई, तो कहाँ पे पेंटागन? HP से. तो HP से पैरेलल HP पे. बनाएंगे. यस सर. HP पे है? Yes, sir. It is on the HP. Yes, sir. ठीक. कहाँ पे रेस्ट कर रहा है? Resting on HP on one of its sides. This is very important. अब एक अगर साइड है तो सेकंड क्या होगा उसका अपोजिट में? कॉर्नर होगा ना पेंटागन के केस में. यस सर. तो आप कॉर्नर मूव कर सकते हैं. लाइक HP पे रखा हमने पेंटागन को और फिर पकड़ के ऊपर 45 खींच दिया आउट ऑफ द प्लेन और फिर जो साइड हमें दी हुई थी उसको हमने 30 डिग्री और ऊपर कर दिया VP से. Very good. That is all you have to do. ठीक है. कितने लोग को समझ आया? यस बोल दो बस. क्वेश्चन. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. That Yes, is like 5% of the class. What about 95%? क्या भाई ऑनलाइन क्लास में नहीं सो गए सर, क्या? जिंदा है. You should take present in. So this is what I can do. I will call out the names now. वासुदेव मिश्रा. Yes, sir. समझ आया? Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन इजी. शुभांशु सराफ. Yes, sir. समझ आया? Yes, sir. थोड़ा सा समझ आया कि थोड़ा सा समझ नहीं आया? मजा मजा क्या प्रॉब्लम है बताओ? धन्यवाद फॉर द कॉमेंट. Means you were not attending the class. Very good. कितने प्रॉब्लम हमने? सर एक डाउट है सर. शुभांशु, क्या क्या प्रॉब्लम डिस्कस किया अभी हमने? प्रोजेक्शंस के प्रॉब्लम डिस्कस की सर. कौन से? सर्कल वाला क्या था, शेप डिस्कस किया अभी दूसरा तक? सेट स्क्वायर वाला था, तीसरा सेट स्क्वायर विद डिस्टेंस वाला था. सेट स्क्वायर क्या होता है? Okay, Subhanshu. So you are now, you have highlighted yourself now. Very good. Someone was asking a doubt. सर रेस्टिंग प्लेन के अपोजिट में जो कॉर्नर होता है उसको रोटेट करते सर हमेशा. ऐसा जरूरी नहीं है. कॉर्नर की बात नहीं हो रही है यहाँ पर. हम पेंटागन की बात कर रहे हैं. अगर हम एक साइड को अगर हम फिक्स कर रहे हैं तो हम रोटेट किसको करेंगे? अपोजिट में तो कॉर्नर ही है ना हमारे पास. हाँ ठीक है ना. अगर रोटेट करना है तो हमारे पास पहला रोटेशन तो कॉर्नर से ही करना पड़ेगा ना.
सर उसी में थोड़ा डाउट आ रहा है कि रोटेट किसके अकॉर्डिंग करता है? अभी देखो प्रॉब्लम देखो समझ आएगा, ठीक है? ओके सर। चलो we'll start with the problem. Then it is 30 Yes, degree, sir. then it is 45 degree as well. Yeah. क्या दिया हुआ है? अ रेगुलर पेंटागन. अ रेगुलर पेंटागन मींस उसके कितना एंगल होता है? 72. इंटरनल एंगल्स पेंटागन में 108 डिग्री. External 72. 108. उसका साइड दिया हुआ है 30 mm साइड इज रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स. सो हमको ट्रू शेप जो मिलेगा वो HP पे मिलेगा एंड वन ऑफ इट्स साइड्स विथ इट्स सरफेस 45 डिग्री इंक्लाइन टू HP. Draw its projection when the side in HP makes 30 degree angle with the VP. ठीक है. अब यहाँ पे कई लोग को डाउट है, अब शुरुआत कैसे करेंगे बताओ? एक साइड से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और जब हमको साइड के बारे में दिया हुआ हो तो वी विल ऑलवेज टेक फिगर लाइक दिस, ठीक? Okay. What about its front view? अब जस्ट इमेजिन इफ इट वाज रिटर्न दैट रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर, तो हम क्या करते? सर एक कॉर्नर से उठाते उसको. कॉर्नर से नहीं, कॉर्नर को फिक्स रखते. कॉर्नर को फिक्स रखते, उधर से उठाते. यहाँ पे साइड दिया है तो साइड को सर साइड को रोटेट करते. देखो बना तो हम कैसे भी सकते हैं, बट अगर मुझे दिया होता कि कॉर्नर से बनाना है तो मैं कॉर्नर को इधर रख के ऐसा पेंटागन बनाता, ऐसा कुछ बनाता, ठीक है? यस सर. ऐसा कुछ बनाता, Yes. ठीक है? दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर. इफ यू विल फॉलो इट इट विल बी इजी टू यू. अगर साइड दिया हुआ है तो साइड दिया हुआ है तो ऐसा पेंटागन बनाइए आप. ओके, सो दिस इज क्लियर. ट्रू शेप. यस सर. इसका साइड पता है हमको 30 mm. उसका डायमेंशनिंग आप कर लेंगे किसी भी एक साइड का. यस सर. नेक्स्ट व्हाट यू विल डू, यू विल प्रोजेक्ट इट ऑन रेफरेंस प्लेन. यस सर. ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा उससे? फ्रंट व्यू. विल गेट द फ्रंट व्यू. तो हमको फ्रंट व्यू में इनिशियली क्या मिला? इनिशियली हमको मिला एक Line. ट्रेस. Line. Trace. Yes, sir. Trace. This will be trace will be known as What which what trace? Vertical trace. वर्टिकल VP पर ट्रेस जो आएगा. ठीक. नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसको? अब हमको पता ही है नेक्स्ट स्टेप क्या करना है. हमको ट्रेस को हम रोटेट कर देंगे. यस सर. 45. इतनी डिस्टेंस को 45 डिग्री रोटेट कर देंगे. यस सर. इसको वापस प्रोजेक्ट करेंगे. देन वी विल गेट अ टॉप व्यू. टॉप व्यू which is now inclined at 45 degree to the HP. है ना? यस सर. ये मिल गया. अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्या बोला सर है? अब इस डायमेंशन degree के पे पेंटागन rotate को उठा के 30 डिग्री VP से लगा 30 डिग्री पे रोटेट कर देंगे. वेरी गुड. सेम डायमेंशन को पेंटागन लेंगे, उसको 30 डिग्री पे इसको न्यू रोटेट कर देंगे. कितने पे? 30 डिग्री. Rotate करना है. इसको रोटेट करेंगे. 30 degree. कौन से साइड को करेंगे? A1 B1. A1 B1 को. इसको ही रोटेट करना है बिकॉज जो साइड है ना, साइड के बारे में ही सारी चीजें दी है. साइड इन HP मेक्स 30 डिग्री एंगल विद VP. तो ये साइड उठाओ A1 B1, सेम डायमेंशन उठाओ. कैसा भी उठा सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. A1 B1 side उठाओ तो ठीक. 30 degree इसको पे वापस रखो. प्रोजेक्ट करेंगे. देन यू विल गेट द फाइनल शेप. क्लियर? Yes, sir. यस सर. Is it getting clear? Yes, sir. Yes, sir. It is clear. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. शुभम यादव. Yes, sir. क्या किया अभी हमने? समझ आया? कुछ समझ आया? सर जो एंड में जो फाइनल 2 इमेजेस बन रही है उसमें से जो ब्लू कलर वाली इमेज है सर, वो हमें ये बता रही है कि हम 30 डिग्री उसको वर्टिकल प्लेन से लगाए हुए हैं. एंड जो उसका प्रोजेक्शन हम कर रहे हैं जिससे हमारा A1 B1 डैश A1 डैश B-1, ये जो इससे हम ये दिखा रहे हैं कि हमने क्योंकि बोला था कि साइड हमारी HP पे लाई करती है. ठीक. वही है. सर लास्ट प्रॉब्लम को पढ़ो. प्रॉब्लम का कोई भी स्टेटमेंट मिस नहीं होना चाहिए. ठीक है. और जो नहीं दिया है उसके लिए आप फ्लेक्सिबल हो. सी यहाँ पे इसका डिस्टेंस नहीं दिया हुआ था ना कि ये कितना नीचे पे है. ये डिस्टेंस दिया हुआ था क्या? नहीं दिया था.
सर अगर दिया होता तो स्टार्टिंग में वो लेते ना. वही ले लेते हम. Obviously, it might have written that it is this much away from the vertical plane. The side is this much away from the vertical plane. सर तो स्टार्टिंग से ले या लास्ट वाला जो फिगर बन रहा है उससे लेते हैं. लास्ट Start फिगर में से- जाके वो बाय बाय, अभी मेरी क्लास चल रही है, 5 बजे आना, जितना चीची चीचू चूचू करना है करना. Okay, उन्नति. Very good. को लगा पब्लिक खेल रही है. उन्नति. उन्नति का कट गया. Sorry sir, actually my cousin was just sitting behind me. No, I am not interested in that. Did you get this problem? Yes sir. समझ आ गया ये problem? Can you explain us why we took this shape as similar to this one? We just rotated it, keeping the dimension similar. Sir, actually it was given in the problem that the line A1 is 30, that the side is No, why 45 we degree kept the inclined. dimension same in both these figures? Dimension is not gonna change. We just rotated it by 30 degree. Okay. Answer. So that the line is like because to keep it 45 degree inclined to HP, so we need to make a replica of that, no? Okay. I hope this problem is clear to most of you. Is there Yes, sir. any- Yes sir, I don't. Sir. Yes, sir. Sir, I don't understand how it's 30 degree inclined with the previous image, that third one. This one? Yes sir, it's not looking like it's 30 degree rotated. This side, look at this side, A1, B1. Is it looking like this side is rotated? Is this side inclined at 30 degree? Yes sir. वही तो बोला है, side is inclined at 30 degree. This Sir, I side was watching with respect to A1, B1. No. Just look at this side, A1, B1. जिसके बारे में दिया हुआ है. Okay? Yes sir. Now next question. हाँ, ये कॉर्नर वाला प्रॉब्लम है. ठीक है? A regular pentagon of 30 mm sides is resting on HP on one of its side while its opposite still the side one, while its opposite vertex is 30 mm above HP. Draw projections when side in HP is 30 degree inclined to VP. Pentagon of 30 mm. अच्छा. अब यहाँ पे क्या मिसिंग है? What is missing here? Inclination with which axis? Which Draw the projection inclination when the with side HP is is missing. Yes, sir. side in HP is ठीक है? 30. But Yeah. इसकी जगह पे कुछ yes. इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. Yes, sir. Yes sir, distance is Yes, the sir. Distance mention किया है. Distance mentioned है above HP. 30 mm, yes sir, 30 तो above HP. सर हम एंगल फिगर आउट कर सकते हैं. ठीक है. Let me ask someone. Tanmay Patel. It's your number now. Tanmay Patel, are you there? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So Tanmay will tell us the steps. How we are first, going to solve this. We will make XY line first. That is called reference axis. Yes. Very good. Yeah, sir. Then we make regular pentagon of 30 mm side using 108 degree angle. Where it is resting? Where We we'll get get the the true shape on HP because it's resting on HP. We'll make it true. Wait 1 minute, sir. 1 point is on the HP and No. Just tell me where we are going to start. Where we always start with the true shape, isn't it? yes, sir. So where in which plane, horizontal plane or vertical plane, will we get the true shape?
On the horizontal plane, sir. Okay, very good. Next, what we'll do? 1 point on the HP. कहाँ बोला है पॉइंट के बारे में? ओके, देखो इसको। ठीक, हाँ हाँ, कोई बताना चाहता है स्टेप्स? एनीवन? So we'll draw the true shape on HP, and then from one, first we can find out the distance from one corner to the perpendicular length from one corner to any side. Using that length and this 30 mm because it's above HP, we'll figure out the angle by trigonometry. No, not required actually. And then we can angle, then it's the previous question. So we'll take angle to the left, with one point to the left side and other parallel line to this line to the right side, and then हम लोग जो vertical plane का projection है उसका ऐसा tilt करेंगे so that it's 30 mm. Exactly. That is what we are going to do. Okay. चलो बनाएं इसको. We have taken the reference point, regular pentagon resting on one of its side. So I told you that when जब आपको side के बारे में दिया है तो draw like this. Always draw like this. ठीक है? We'll do the projections on vertical plane. So now we are getting the front view of it. Front view is nothing but the trace. And now, अब हमको यहाँ पे नहीं दिया है कि how much degree it is inclined to the horizontal plane, but it is given here that one of its sides is resting on one of its side while its opposite vertex is 30 mm above HP. ठीक है? देखो, अगर this is side, so it will be 45 degree inclined to the edge. So basically it will be 45 of the corner. Just with the basic logic we can say that it is 45 degree inclined to the HP and 30 degree inclined to the VP. Yes. इसकी पोजीशन दी हुई है, कितनी दी हुई है? D dash दिया कि वो 30 mm above है. Above HP. ठीक, तो ये 30 डिग्री ले लिया हमने. 30. एक लोकस ड्रॉ हो जाएगा. एक लोकस ड्रॉ किया हमने 30 mm का. कर सकते हैं लोकस? Yes sir. ये लोकस ड्रॉ किया विद कौन सी लाइन रहेगी ये? कंस्ट्रक्शन लाइन? Yes sir. With 2H pencil? ओके. हाँ, अब ये इस पॉइंट को हमने मार्क किया. Then we took the length as how much? 30 mm. ये लेंथ मेजर किया हमने यहाँ से यहाँ तक. ठीक है? Yes sir. यहाँ पे हमने अपना क्या बोलते हैं उसको, कंपास का वो पॉइंट रखा और ये लेंथ मेजर की और यहाँ पे एक आर्क काट दिया. Yes sir. ठीक है? समझ आया प्रोसीजर? Yes sir. Mini procedure. This is one of the mini procedure. You can directly measure it using your scale also. Doesn't matter. We will just take one end to 30 But this is how you got the and just measure it with the help of the angle. and the cutter. Angle with HP. फिर इसको reproduce कर दिया हमने. Basically we got this the shape. angle it is अब क्या बोला है? with HP. We draw the projection and then we will just incline 30 degree. Same dimension figure, 30 degree inclined to VP. Same dimension. use it and incline it to. Same dimension. We just replicate it, right? And incline it with 30 degree. VP. ठीक? Yes. So this is your final view. Clear है? Yes sir. Yes sir. A1 B1 को हम 30 डिग्री इंक्लाइन करके और डायमेंशन सारे सेम लेके इसको कैसे भी हम इंक्लाइन कर सकते हैं ना, मतलब कैसे भी क्यों करोगे, मतलब A1 B1 को तो 30 डिग्री ही इंक्लाइन करोगे. हाँ 30 डिग्री इंक्लाइन करना है, लेकिन 30 डिग्री यहाँ से भी ले सकते हो. मिरर इमेज This you can do. This you can do.
Okay. Clear है this problem? Anyone is having doubt? Yes, sir. Tenzin, roll number 104. Yes, sir. कहाँ से हो आप? लद्दाख से सर. हाँ? लद्दाख sir. Ladakh. Very good. Yes, sir. Are you getting this? Yes, sir. Okay. Sure. Read this problem. Oh. This is actually the most important problem of your planes. ठीक है? बहुत ही important problem है ये. So I'll request everyone to pay attention on this problem. Possibly this may be the last problem, I'll discuss one more problem after this. Okay. So inclination of the top view is given. I'll be happy if few of you can solve this problem. Actually, there are two parts of this problem. The first part is problem number 8. Second part is problem number 9. Start करें. Take your pen and copy and try it yourself. Sir, what is TV? TV. Top view. Sir, we can like draw a 50. अच्छा पहले ये बताओ ट्रू शेप कहाँ पे? ट्रू शेप तो HP पे. ठीक. 2 स्टेप तो क्लियर होंगे मेरे ख्याल से. सर HP पे पहले ट्रू शेप बना के उसको AC डायमीटर बना देंगे जो सर रेफरेंस लाइन के पैरेलल हो और उससे सर उसको 30 डिग्री इंक्लाइन करा दें तो मतलब मेरे पास एक एलिप्स आ जाएगा जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम था. वेरी गुड. एंड फिर उस पूरी एलिप्स का जो हमने AC डायमीटर रखा है उस पूरे AC डायमीटर को अगर मैं 45 डिग्री रेफरेंस लाइन से अगेन इंक्लाइन कराता हूँ VP दिखाते हुए एंड मतलब टेक्निकली मैंने उस पूरे एलिप्स को उठा के 45 डिग्री दोबारा इंक्लाइन करा दिया. ठीक. तो वो हो जाना चाहिए. सही है, बिल्कुल सही. वेरी गुड. सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग टिल नाउ. ठीक है, ये वही चीज है, नया कुछ नहीं है ना इसमें. नहीं तो कुछ भी नया नहीं है. सर एलिप्स को रिप्रोड्यूस कैसे I'll just find the top view and I'll just incline it at 45 degree. Simple. Yes sir. बस यूज करिए. But sir, while inclining we use this, right? We use the same dimensions for other figures. करना I'll just पड़ेगा. incline the top view. उसको बॉक्स के फॉर्म में ले जाके करोगे ना, रेक्टेंगल बना के. रेक्टेंगल तो रिप्रोड्यूस कर सकते हो ना. Top view को 45 Yes sir. फिर उसके अंदर सब्सक्राइब करोगे तुम एलिप्स को. Okay sir. Simple है. 3 डायमेंशन. So I guess I got one answer which is correct. Just incline. Others, did you follow what he said? I did. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. विभूति चंद्राकर. Are you there, Vibhuti? So she is not attending the class. Okay.
Sujal Jain. Hello, sir. You got this problem? Sir, I'm on it, sir. Okay. Chal. Sir, can you tell me how we get the idea for which assumption we have to take for the initial position? I mean, for the second question it is written. Second question? Assumption for initial position. How do we assume that by which, assuming on the which initial position which should we start to do the problem? You mean where to start from? Yes, sir. Yes, sir. Assumption for initial position, I guess, that parallel to it. So Viraj will tell you. Viraj? Yes, sir. Tell him how we start. Sir, we have to start by drawing the true shape. So, sir, question की language में first line में it would be clear that the circle exactly rests. So it's written that the circle rests on HP. So because it is given as rest on HP, that means we have to first draw the true shape on HP, and then we are saying that HP से उसका diameter या उसको whatever given आगे उसी से कहाँ से कितना inclined है. So because it is given a diameter inclined है and A points inclined है, तो we can pinpoint our finger on A and हम AC को उठा दिया हमने 30 degree. That becomes the inclination to HP. बस इतना काफी है. Who was asking the problem? Vasudev? Yes, sir. समझ आया? Yes, sir. Sir, इसका जो second part है, its top views in 45 degree inclined to VP. इसमें हम लोग मतलब rest से ऊपर उठा देंगे 45 degree. हाँ, पहले तो वही करना है ना आपको. पहले में 30 डिग्री करो. 30 डिग्री करो. 30 डिग्री. पहले 30 डिग्री करो. देखो ऐसा मत समझो. देखो सिंपल रखो चीजों को. सबसे पहले आपको इतना समझ आया कि ट्रू शेप कहाँ पे है? Yes, sir. Vasudev, I am talking to you. Okay? Yes, sir. Yes, sir. पहले ट्रू शेप आपको समझ आ गया कहाँ पे है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है. Yes. Means it is vertical with the it is perpendicular to the vertical plane. Vertical plane. ठीक है? वहां पे आपको क्या मिला? ट्रेसेस मिले. ट्रेस मिलेंगे. अब जो ट्रेस मिला वो लाइन के फॉर्म में मिलेगा. ठीक है? और लाइन को मैं रोटेट कर सकता हूँ इजीली. तो अगर मैं उस लाइन को अगर रोटेट कर रहा हूं, देन आई एम मेकिंग एन एंगल विथ HP. ठीक है ना? Yes, sir. Now I got it. Thank you, sir. मैं उसको HP से किया. HP वाला काम हो गया मेरा. Now what is remaining? VP. फिर मैं उसको वापस VP से करूंगा. Okay. So see this problem. यहाँ आपको 12 partitions करने हैं इसके, है ना? 12 divisions. 8 would also Don't make it 4 divisions. At least make it 8 divisions. Okay. Is it clear? Yes, sir. ठीक. अब मैंने इसको रेफरेंस लाइन के ऊपर क्यों लिया इसको? बिकॉज इसमें कुछ दिया ही नहीं हुआ था ना वर्टिकल प्लेन के बारे में. दिया है क्या? सर रेस्टिंग ऑन HP. यस सर, HP पे रेस्ट कर रहा है तो वो डिस्टेंस नहीं होगा ना XY से कुछ. नहीं वो उसको हाँ लाइन पे भी बना सकते थे आप. ठीक है? बिकॉज इट्स रेस्टिंग ऑन HP ऑन एंड A. रेस्टिंग ऑन HP दिया है ना. फाइनल व्यू आएगा जो फाइनल व्यू. मेक श्योर तो फाइनल व्यू शुड बी ऑन रेस्टिंग ऑन HP. ठीक है? यस सर, इनिशियली मतलब कितना भी डिस्टेंस ले सकते हैं. ले लो. फाइनल व्यू में आपका रेस्टिंग ऑन HP आना चाहिए. ठीक है? दिस स्टेप इज क्लियर एवरीवन? फर्स्ट स्टेप. Yes, sir. Yes, sir. सेकंड स्टेप डिग्री ले लिया इसको. देन वी मेड एन इंक्लिनेशन विद द HP. प्रोजेक्ट किए इसको डाउनवर्ड. इसको इधर से लिए. देन वी गॉट एन एलिप्स लाइक शेप. दिस स्टेप इज आल्सो क्लियर. अब नाउ व्हाट इट इज सेड हियर. Now
45 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी। तो पूरा का पूरा उठा लिया इसको एज इट इज, बॉक्स बनाएंगे हम और इसको रिप्रोड्यूस कर देंगे, देन वी विल गेट द फाइनल व्यू। Basically, we just rotated the top. Clear? Anyone is having doubt here? Yes, sir. देखो अभी तक हमने पिछले जितने क्वेश्चन में किया वही किया यहाँ पे, है ना? सर इसमें मार्किंग गलत है क्या? कौन सी मार्किंग? फाइनल फिगर है A1 थर्ड वाले में नहीं, मुझे तो नहीं लग रही है। क्या गलत है इसमें? So D1 B1 is the longer length in second figure and third में D1 B1 shorter length कर रहा है। Yes sir. हाँ 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 हाँ, गलत है। That is wrong. I agree to you. वो विजुअली गलत है, विजुअली गलत है वो, ठीक है? Yes sir. Yes. आपको प्रोसीजर समझ आ गया ना? Yes sir. Yes. Are you having a soft copy of Andy Bhatt? Yes sir. Happy. Yes, sir. Yes, sir. Yes, everyone have. Very good. Don't distribute here and there and spread plagiarism. Plagiarism बोलते हैं, क्या बोलते हैं? Copyright. वही बोलते हैं। Copyright. नहीं नहीं, violation of copyrights. Okay, till then you can read this problem. समझ आ रहा है ये? Yes sir. क्या डिफरेंस है दोनों प्रॉब्लम में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द प्रॉब्लम्स? And A is resting on And inclination of with respect to planes. ढंग से पढ़ो इसको, रीड इट ट्वाइस। लास्ट में क्या हो रहा था कि पूरा का पूरा जो फिगर था वो हमारा 45 डिग्री इंक्लाइन हो रहा था, ठीक है? बट यहाँ पे डायमीटर की बात हो रही है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डायमीटर. Diameter is making an angle 45 degree and 30 degree. Okay, sir. Getting? Yes, sir. Yes. Where you are not rotating the final view, you are rotating the diameter. यहाँ पे आपको locus काम आएगा, if you can understand. So won't it be same? No. So even in the previous figure, we have rotated the diameter only, right? Is it? We have rotated the entire figure about the diameter, right? About the. But here what it is said. वहां पे उसका टॉप व्यू वाज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, while its top view is 45 degree inclined. तो हमने क्या किया था? देखो फिर से पढ़ो प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम नंबर 8, रीड इट अगेन. Its diameter AC, which is 30 degree inclined to HP, while its top view is 45 degree inclined to VP. तो टॉप व्यू का पूरा इंक्लाइंड था ना वहां पे, the whole of top view was inclined. अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? Its diameter AC, which is inclined 30 degree to HP, while it makes 45 degree inclined to VP. यहाँ पे डायमीटर की बात हो रही है. डायमीटर को आपको ऐसा फिक्स करना है कि डायमीटर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इंक्लाइंड टू VP, नॉट द टॉप व्यू.
ठीक है? So I think when you draw it, it will be more clear because when I'm visualizing it, I still think CME alpha. So. Yes, sir, me too. ठीक, नहीं पर ये समझना तो पहले बहुत जरूरी है। पर फिर से अभी we have time, don't worry. We'll focus on this question. When I say violet top view, what do you mean by it's here? At the plane of the circle is inclined, which is the top is inclined. फिर से देखो. Am I making some sense? Sure. So can you explain this again, if you don't mind? Writer A 30 degree to HP. यहाँ तो clear है. While its top view is 45 degree inclined to VP. While its top view means while diameter top view. ठीक है? See, if you don't mind, All right.